अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है। कोशिश करूँगा मैं कि पहले थोड़ा लेक्चर करवा दूँ, उसके बाद आपको क्लास असाइनमेंट में दे दूँ, क्योंकि बोलना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ओके, अच्छा, ये कंप्यूटर क्राइम्स है। इसमें क्या है? हैकिंग, आइडेंटिफाइंग आइडेंटिटी थेफ्ट एंड क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, स्कैम, फोर्जरी, crime fighting versus privacy and civil liberties, laws and rule of the web। तो ये हम सबसे पहले देखते हैं कंप्यूटर के क्राइम कितने होते हैं। ये कैस्पर की बता रहा है दुनिया में किस तरह कितने टाइप के कंप्यूटर के क्राइम है। कंप्यूटर क्राइम होते क्या है, पहली बात ये टाइप्स क्या है और किस तरह से उसको काउंटर किया जाता है। साइबर क्राइम इज क्रिमिनल एक्टिविटी। साइबर क्राइम इज क्रिमिनल एक्टिविटी दैट either targets or use a computer network or network devices। तो ये कंप्यूटर एक्टिविटी है जो कि टारगेट करती है कंप्यूटर्स को, कंप्यूटर नेटवर्क्स को, ये कंप्यूटर एक्टिविटीज को, इसको कंप्यूटर क्राइम कहते हैं। टाइप्स ऑफ क्राइम्स क्या है जी? इसमें ईमेल का फ्रॉड है, आइडेंटिटी फ्रॉड है, थेफ्ट ऑफ फाइनेंशियल और कार्ड पेमेंट्स है, थेफ्ट ये आप लिख लें इसको, थेफ्ट इन स्केल ऑफ कोऑपरेट डेटा है, साइबर एक्सटॉर्शन है, रैंसम अटैक है, साइबर जैकिंग, यह है, क्रिप्टो जैकिंग है, साइबर एक्सपोन साइबर एस्पोनेज है, और मोस्ट साइबर क्राइम जो है आ रहे होते हैं criminal activity that target criminal activity that use computer to commit other crimes, ताकि वो और क्राइम कर सके। ये आप चीजें पहले लिख लीजिए, फिर हम इसकी वीडियो पे जाएंगे। अच्छा, अटेंडेंस मैंने आपकी वो पोस्ट कर दी है। कंप्यूटर क्राइम्स आप लिख लीजिए, कैस्पर की वाले बता रहे हैं कंप्यूटर क्राइम्स का ये, और इनकी इंफॉर्मेशन जो है वो वर्ल्ड लीडर है। आप लोग लिख लें तो मुझे बता दीजिएगा।
आप लोगों ने लिख लिया है? सर आप ये वाला लिंक लिंक दे दूं? असल में मेरा गला जो है ना वो सही नहीं हो रहा, खराब हो रहा है। और ये कि मैं थोड़ी थोड़ी देर में गरारे भी कर रहा होता हूँ, मगर डॉक्टर कह रहे हैं कि आजकल चल रहा है ये। अब लिख लेंगे तो हम उसके बाद जो है इसकी वीडियो पे जाते हैं। ये जरा वीडियो देखिए। Ollie's such a clever boy. Such a clever boy. Custard cream? Spends all night on his computer. Listen, how smart is this? You know them shooter games? The other day he was losing, so he crashed the server. Proper whiz kid. It's amazing what kids can do these days. Night, Ollie. Or what do they call it? DDoSing. That's it, I saw it on the telly. And he's no dosser though, our Ollie. 100% in maths. Every single exam for the last 2 years. Not to mention his GCSE coursework. It's going to go a long way. Down the M11 to Cambridge. Computer sciences degree. Top career in computing. Internet billionaire by the time he's 25, the next Steve Gates. No, he's very clever with his money too. He's got more in his account than me. Chocolate finger. And we only give him a tenner a week. Told us he robbed a bank. Anyway, that's probably enough of us rambling on. No, not at all. In fact, best if we start again. From the beginning. इस वीडियो में क्या देखा आपने? जी बताइए। इसको दोबारा से प्ले कर रहा हूँ। Ollie's such a clever boy. Such a clever boy. Custard cream? Spends all night on his computer. Listen, how smart is this? You know them shooter games? The other day he was losing, so he crashed the server. Proper whiz kid. It's amazing what kids can do these days. Night, Ollie. Or what do they call it? DDoSing. That's it, I saw it on the telly. And he's no dosser though, our Ollie. 100% in maths. Every single exam for the last 2 years. Not to mention his GCSE coursework. It's going to go a long way. Down the M11 to Cambridge. Computer sciences degree. Top career in computing. Internet billionaire by the time he's 25, the next Steve Gates. No, he's very clever with his money too. He's got more in his account than me. Chocolate finger. And we only give him a tenner a week. Told us he robbed a bank. Anyway, that's probably enough of us rambling on. No, not at all. In fact, best if we start again. From the beginning. जी बताइए। जी इस वीडियो में आपने क्या देखा? जी बताइए, आपने इस वीडियो में क्या देखा? सर इस वीडियो में ये देखा कि बच्चा जो है वो साइबर क्राइम कमिट करता है और उनके पेरेंट्स को इस बात की अवेयरनेस ही नहीं होती, तो समझ रहे होता है क्या कोई बहुत अच्छा काम किया। बिल्कुल ठीक है। आखिर में क्या होता है देखे ना, यहाँ पे वीडियो में सबसे पहली चीज क्या आ रही है? मनी ट्रांसफर। यहाँ लिखा हुआ आ रहा है अकाउंट से जो पैसा जो है वो निकाल रहा है अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है। तो सबसे पहली बात ये इंटरनेट क्राइम्स के अंदर ये आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है कि आप हैकिंग करते हैं और ये पैसा किसी और का पैसा
अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाते हैं मगर ट्रैक हो जाती है। अच्छा, दूसरी वीडियो क्या है हमारे पास, ये एनसीए वालों की है, नेशनल क्राइम एजेंसी। क्या हो गया इसको? साइबर अवेयर जो है वो नेशनल क्राइम एजेंसी का ही एक डिपार्टमेंट है। जी कहता है क्रिएट सेपरेट पासवर्ड फॉर योर ईमेल। आप हर ईमेल का अलग पासवर्ड बनाइए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें आप यूजिंग 3 रैंडम वर्ड्स। रैंडम वर्ड्स की बात हो रही है, या कोई लिंक ना हो आपस में। सेव योर पासवर्ड इन योर ब्राउजर। पासवर्ड को आप ब्राउजर में ही रखें, सही है। और टर्न ऑन टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपके मोबाइल को भी इंक्लूड कर लेगा वो ऑथेंटिकेट करने के लिए। और एक और ब्राउजर जो है आपको आपकी ईमेल एड्रेस दूसरी लेगा ताकि आपको वो रिकवर करवा सके। अपडेट योर डिवाइस। डिवाइस को आप मोस्ट अपडेट रखें आप, यानी कि आप डिवाइस के अंदर तमाम अपडेट जो है विंडोज की वो सही रखें। और टर्न ऑन बैकअप। बैकअप्स को टर्न ऑन रखें क्योंकि सिस्टम को उड़ा दे तो आपके पास लॉजिक हो उसको रिकवर करने की। अच्छा, यह होगा तमाम चीज़ों को बताया था। सॉरी, मेरा गला काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। देखिए, ऑनलाइन शॉपिंग अगर आप चाह रहे हैं करना, सही है, उसमें सबसे पहले क्या है, चेयर चूज केयरफुली वेयर योर शॉप। सही है, तो आपको सबसे पहले पता लगाना है आप कहाँ से शॉपिंग कर रहे हैं। दैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूज ए क्रेडिट कार्ड फॉर ऑनलाइन पेमेंट्स। क्रेडिट कार्ड कब यूज करें? देखिए, आप क्रेडिट कार्ड वालों को देखें, ये लोग एनसीए वालों को इतना आइडिया है मगर पाकिस्तानियों को आइडिया नहीं है। तो आप जब भी क्रेडिट कार्ड यूज करें आप उन बैंक को बता दें कि मैं ऑनलाइन शॉपिंग करना चाह रहा हूँ और इतनी लिमिट की मुझे शॉपिंग करनी है, 5,000 की शॉपिंग करनी है। आप बैंक को फोन करें पहले, उनको बता दें मेरी ट्रांजैक्शन 5,000 की होगी और आपने इतने ही पैसे इतने टाइम से लेके इतने टाइम तक खोलना है, इसको ओपन करना है और इस पेमेंट से ज़्यादा पेमेंट जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो पाकिस्तानियों को नहीं जानते एनसीए वाले, मगर ये कि आपको मैं बता रहा हूँ जो राइट वे टू प्रोटेक्ट है वो यही है, बैंक को इन्वॉल्व करें। ओनली प्रोवाइड एनी डिटेल्स टू कंप्लीट योर परचेज। जितनी डिटेल्स की ज़रूरत है वो ही दें, ज़्यादा डिटेल्स मत दें अपनी।
कीप योर अकाउंट सिक्योर, अपना अकाउंट सिक्योर रखें आप, उसकी इंफॉर्मेशन ज़्यादा डिटेल्स ना दें। वॉच आउट द सब्सक्रिप्शन ईमेल, कॉल्स एंड टेक्स्ट मैसेजेस। आपको बार बार जो ईमेल्स आएंगी वहां से, वो आप उन चीज़ों को आप देखें, उनको आप क्लिक ना करें। उन ईमेल्स को आप जो क्लिक ना करें, क्योंकि हो सकता है वो फोर्जरी हो, और आपके प्रोडक्ट का वो टाइम वो बता देंगे और इस टाइम तक इस टाइम तक डिलीवर हो जाएगा, तो वो आप रखें। मगर बेकार के मैसेजेस, बेकार की ईमेल्स जो है वो आपके लिए खतरनाक है। इफ थिंग्स गोज रॉन्ग, पहली बात ही आपके पास जो चीज़ें खराबी की तरफ जाएंगी वो जब जाएंगी जब बैंक को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। आप बैंक को इन्वॉल्व कर लें तो चीज़ें खराबी की तरफ नहीं जाएंगी। अब ये देखिए, टॉप 10 क्राइम टाइप्स रिपोर्ट इन 2017 बाय विक्टिम लॉसेस। इन्वेस्टमेंट, यूनिट 10, 100,000, 10,000 lakh, 10 lakh crore, सही है। 96, 9 crore 68 lakh। एडवांस फीस के अंदर देख लीजिए, रेंट के अंदर देख लें, कॉर्पोरेट डेटा ब्रीच में देख लें आप। उसके बाद कॉन्फिडेंस फ्रॉड रोमांस। अच्छा, कॉन्फिडेंस फ्रॉड रोमांस के माने ये होते हैं कि आप जो है वो एक सर्टेन ड्यूरेशन के लिए एक रिलेशनशिप बनाते हैं और उस बंदे का पैसा जो है इस्तेमाल करते हैं। आपको पाकिस्तान के अंदर जो है, आप ये हमारी गर्ल्स जो है वैसी नहीं है, मगर बाहर के अंदर क्या होता है कि वो जो लेडीज होती हैं, गर्ल्स होती हैं, वो क्या करती हैं कि एक सर्टेन टाइम तक रिलेशनशिप रखती हैं, वो अपने पर खर्चा करवाती हैं, शॉपिंग करवाती हैं, ऐसे काम करती हैं जिससे दूसरी पार्टी का जो है बहुत नुकसान हो। सही है। और एट द एंड ऑफ द डे होता क्या है कि वो फिर उसको छोड़ के चली जाती है। ठीक है, तो ये क्राइम है, सब चीजें क्राइम के अंदर आ रही होती है, जिसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंस फ्रॉड रोमांस। कल की न्यूज आप देख लें, कल ही की न्यूज आप देख लें कि उन्होंने जो है मजदूर को दिखाई 20 साल की लड़की और रिश्ता पक्का किया, और जब वो रुखसती हुई, निकाह हो गया, तो 70 साल की माँ ही पकड़ा दी उन्हें कि भाई इससे शादी हुई है आपकी। तो ये सारे के सारे फ्रॉड में आता है। नॉन पेमेंट नॉन डिलीवरी, ये पाकिस्तान के अंदर बहुत कॉमन है। इसके मतलब ये क्या, पेमेंट ले लेते हैं आप, ये वाला पॉइंट, पेमेंट आप ले लेते, पेमेंट आप ले लेते मगर आप प्रोडक्ट को डिलीवर नहीं करते। ये बहुत बहुत बड़ा क्राइम है, पाकिस्तान के अंदर बहुत कॉमन है। उसके बाद क्या है, पर्सनल डेटा ब्रीच। आपका डेटा जो है वो, मैं इसकी एग्जाम्पल बताता हूँ आपको पर्सनल डेटा ब्रीच की। स्कैमर्स लगा दिए जाते हैं जहाँ पे आप कार्ड यूज करते हैं। तो आपका क्रेडिट कार्ड है अगर, वो करते क्या है, उस क्रेडिट कार्ड के अंदर एक चिप लगी होती है, उस चिप के अंदर आप एक कोड डाल देते हैं। वो कोड करता क्या है, जैसे ही आप क्रेडिट कार्ड को क्रॉस करते हैं, मशीन से पास करवाते हैं, वो जितने भी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन जो पहले पास हो चुके होते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन उस चिप के अंदर स्टोर हो जाती है। और आपके कार्ड के अंदर 100, 150, 300, 400, 500 जितनी उसकी कैपेसिटी होती है, तो सारे क्रेडिट कार्ड के नाम और आईडी आ जाती है। फिर आप करते क्या है, उन क्रेडिट कार्ड को आप छापते हैं। सही है, आप मशीन खरीदते हैं, मशीन खरीदने के बाद उस पर क्रेडिट कार्ड आप छापते हैं और नंबर भी आप छापते हैं। उसके बाद वो इंफॉर्मेशन जो है, वो जो कार्ड्स हैं, वो आप गली मोहल्ले में बेचते हैं। 10,000, 10,000 का एक कार्ड बेचते हैं और कहते हैं कि इसके अंदर पैसे हैं, आप इसको यूटिलाइज करें। तो
अभी तक की जो दुनिया की हिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा फ्रॉड है स्कैमिंग का, वो पाकिस्तान का है, लाहौर का। तो उसके अंदर वो करते क्या है, वो सारी यही इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों को बेच रहे होते हैं। तो ये बहुत मोस्ट कॉमन है ये। और ये स्कैम से बचने का जो इलाज है वो यही है कि जो मशीन है उसके अंदर एंटी स्कैमर जो है लगा हुआ हो, और पाकिस्तानी को पता ही नहीं है एंटी स्कैमर क्या होता है। यानी कि मशीन अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो दूसरे कार्ड को ट्रांसफर ना कर सके। दैट इज मोस्ट कॉमन। देखिए, Hiya, Queen of All Knowledge here, reminding you, creeps out there on the internet hack, scam, and trick savvy cyber users every day. But we can fight back. It's as easy as IC3. If you're a victim of online crime, don't give up. Visit IC3, the FBI's Internet Crime Complaint Center. Your tips help the FBI track down cyber criminals around the world. Report your crime to www.ic3.gov today. ओके, इनका एक सेपरेट ब्रांच बना दी है इन्होंने जो इंटरनेट क्राइम से रिलेटेड है। और इससे फायदा क्या होता है? दुनिया देखिए, नंबर 1 जो क्राइम है, दुनिया में 3 बड़े क्राइम्स हैं। नंबर 1 आपके पास असला बेचना, जिसे आर्म्स डीलिंग कहते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी कि बच्चों को खरीदना, औरतों को खरीदना, बेचना, ये सारा क्राइम है। नंबर 3 आपके पास क्या है, वो ड्रग्स है। तो 3 क्राइम्स हैं दुनिया में नंबर 1 पर है। और ये तीनों क्राइम्स जो है वो डार्क वेब के थ्रू हो रहे होते हैं। डार्क वेब के थ्रू होते हैं ये तीन क्राइम्स। ठीक है, ये वीडियो देखिए आप। अच्छा, अभी वीडियो देखिएगा, मैं थोड़ा सा गरारे करके आ जाता हूँ। ठीक है, ये वीडियो आप देखिए। Easier than a bank heist, but still illegal. Cybercrime is any criminal activity that involves a computer, networked device, or network. Cybercrime is usually committed to generate profit for the cybercriminals. However, some cybercrime targets specific devices to damage or disable them, or to spread malware, illegal information, images, or other malicious material. The ubiquity of internet connectivity and the anonymity, speed, and convenience it provides has dramatically increased the volume and pace of cybercrime activities. Crimes like ransom, fraud, money laundering, and harassment are easier to carry out than ever before. Unlike, say, an art heist, a criminal doesn't have to be present to physically commit a cybercrime. Just about anyone can engage in cybercrime. There's no one way to carry out a cyber attack. Cybercriminals use a variety of methods and techniques, such as distributed denial of service attacks, malware or ransomware attacks, phishing campaigns,
and website hijacking. Social engineering is a large component to most types of cybercrime. Many cyber attacks rely on the victims activating malware with clicks or downloads, or falling for fake requests for money, information, or access. In business, cybercrimes typically have a financial impact, sometimes billions of dollars worth. And businesses can also experience reputational damage, share price drops, and sensitive data loss. जी, साइबर क्राइम में आपने क्या देखा? Easier than a bank heist, but still illegal. Cybercrime is any criminal activity that involves a computer, networked device, or network. Cybercrime is usually committed to generate profit for the cybercriminals. However, some cybercrime targets specific devices to damage or disable them, or to spread malware, illegal information, images, or other malicious material. The ubiquity of internet connectivity and the anonymity, speed, and convenience it provides has dramatically increased the volume and pace of cybercrime activities. Crimes like ransom, fraud, money laundering, and harassment are easier to carry out than ever before. Unlike, say, an art heist, a criminal doesn't have to be present to physically commit a cybercrime. Just about anyone can engage in cybercrime. There's no one way to carry out a cyber attack. Cybercriminals use a variety of methods and techniques, such as distributed denial of service attacks, malware or ransomware attacks, phishing campaigns, and website hijacking. Social engineering is a large component to most types of cybercrime. Many cyber attacks rely on the victims activating malware with clicks or downloads, or falling for fake requests for money, information, or access. In business, cybercrimes typically have a financial impact, sometimes billions of dollars worth. And businesses can also experience reputational damage, share price drops, and sensitive data loss.
called computer crime. When a and worm computer infects bombs. a new system, its first move is to begin seeking more systems to infect, usually by exploring the infected system and its network connections. A worm usually uses ordinary networking protocols to explore its local network and spread once it discovers potential victim systems. Vulnerable systems, systems running older, unpatched software that is vulnerable to the attack, will likely be infected. Not all systems will be vulnerable. Some worms are operating system dependent and will only infect Windows or Apple or Linux systems. Worms may also be thwarted when attempting to infect systems that are running up-to-date, fully patched software. The worm will continue to attempt to spread when an infected system is connected to more than one network, or when that system connects to a new network, further spreading the infection. Once connected to another network, the process begins again. A worm can quickly spread to many systems across many different networks, especially if it exploits a widespread vulnerability. Once a worm is detected, it must be removed, and in the worst case, the system may need to be re-imaged. It's much better to avoid infection in the first place by staying up to date with system software and patches, disabling unneeded network protocols, and effective cybersecurity system hygiene. उसके बाद साइबर क्राइम्स में आता है आपके पास वायरसेस वॉर्म्स में डिफरेंस क्या है. ये कैस्परकी वाले बता रहे हैं, ये काफी नंबर 1 पे ये चल रहे होते हैं चीजों को समझाने के लिए. कैस्परकी वाले, इसको आप सुने, फिर आएंगे साइबर सिक्योरिटी पे, फिर लेक्चर की तरफ जाएंगे. फिर viruses, worms, Trojans, and bots are all part of a class of software called malware. The overwhelming majority of malware is created to make money illegally, often by stealing sensitive and confidential information from spyware. Spyware secretly gathers private information about the user activity, such as internet usage, and logs keystrokes via the process of keylogging to steal passwords and other sensitive data. Worms. Worms can replicate themselves and infect multiple computers on a network, causing major damage. Network worms often use computer networks to spread, slowing down traffic and relying on security failures such as outdated operating systems and no antivirus programs installed. In contrast, viruses require the spreading of an infected host file. Worms are a standalone software and do not require a host or human help to spread. The best way to protect your system from malware is to keep your operating system clean by downloading regular patches, updates, and making sure that your computer is protected by the latest antivirus software from a trusted vendor. अच्छा, इसके बाद जो है साइबर सिक्योरिटी पे जा रहे हैं और फिर नेक्स्ट के अंदर हम लेक्चर पे जाएंगे. Meet Anne. She often shops from www.shoppingcart.com. She has her information like email ID, address, and credit card details saved on the website to enable a faster and hassle-free shopping experience. The required information is stored in a server. One day, Anne received an email which stated her eligibility for a special discount voucher from shoppingcart.com. In order to receive the coupon code, she was asked to fill in her shoppingcart.com account credentials. This didn't seem fishy to her at the time, as she thought it was just an account verification step. Little did she realize the danger she would be facing. She was knocked off her feet when a substantial amount of money was wiped off her account. How do you think this happened? Well, yes, the email she received was fake. Anne's shoppingcart.com account witnessed unauthorized access from a third party. This type of attack is known as a cyber attack, and the person who carries it out is called a hacker. Could Anne have prevented this attack? Indeed, she could have, with the help of cybersecurity. Cybersecurity involves techniques that help in securing various digital components, networks, data, and computer systems from unauthorized digital access.
There are multiple ways to implement cybersecurity, depending on the kind of network you are connected to and the type of cyber attacks you are prone to. So, let's take a look at the various cyber attacks that Anne could have been exposed to. One of the most common types of cyber attacks is a malware attack like Trojan, adware, and spyware, to name a few. Had Anne downloaded any suspicious attachments online, her system could have gotten corrupted by certain malicious viruses embedded within the attachments. Next is a phishing attack, the type of cyber attack which Anne experienced. Here, the hacker usually sends fraudulent emails, which appear to be coming from a legitimate source. This is done to install malware or to steal sensitive data like credit card information and login credentials. Another type of attack is the man-in-the-middle attack. Here, the hacker gains access to the information path between Anne's device and the website's server. The hacker's computer takes over Anne's IP address. By doing so, the communication line between Anne and the website is secretly intercepted. This commonly happens with unsecured Wi-Fi networks and also through malware. Password attack is one of the easiest ways to hack a system. Here, Anne's password could have been cracked by using either common passwords or trying all possible alphabetical combinations. To prevent future cyber attacks, Anne sought to implement a few cybersecurity practices. First, she installed a firewall. As the name suggests, it is a virtual wall between Anne's computer and the internet. Firewalls filter the incoming and outgoing traffic from your device to safeguard your network, and they can either be software applications or hardware reinforcements. Secondly, Anne implemented honeypots. Just like how flowers attract bees, dummy computer systems, called honeypots, are used to attract attackers. These systems are made to look vulnerable in order to deceive attackers, and this, in turn, defends the real system. In addition to these, she also decided to use unique alphanumeric passwords, antivirus software, and started avoiding mails from unknown senders. That was Anne's story. Cyber attacks are not just confined to individuals, but also to public and private organizations. The cyber attacks carried out in such places are more deadly, and they result in colossal losses. Motives of such attacks are many, starting from tampering with crucial data to monetary gains. Let's have a look at a few of the cyber attacks that companies are subjected to. Various public sector organizations and large corporations face the Advanced Persistent Threat, APT. In this form of attack, hackers gain access to networks for a prolonged period in order to continuously gain confidential information. Companies also witness the denial of service attack, where networks are flooded with traffic, which in turn leaves legitimate service requests unattended. A variant of this is the distributed denial of service, DDoS attack, when multiple systems are used to launch the attack. When a hacker manipulates a standard SQL query in a database-driven website, it is known as a SQL injection attack. By doing so, hackers can view, edit, and delete tables from databases. Amidst a plethora of cyber attacks, it is indeed a challenge for organizations with several networks and servers to ensure complete security. This is not an easy task, and to help with this, cybersecurity professionals are hired to work on identifying cyber threats and securing a company's network. There are multiple job roles in the field of cybersecurity. If hacking fascinates you, then the role of an ethical hacker is something to be explored. Such professionals try to exploit a network's vulnerabilities, just like how a hacker would do, but only to identify those vulnerabilities and resolve them for protection against an actual cyber attack. But if you are looking to design robust security structures, then the role of a security architect is more apt. A Chief Information Security Officer, CISO, plays a crucial role in enterprise security and is entrusted with the overall safety of the information in an organization. So, here's a question for you. Identify the type of cyber attack where the hacker's system takes over the client's IP address. A. DDoS attack. B. Man-in-the-middle attack. C. Phishing attack. D. Password attack. Give it a thought and leave your answers in the comments section below. 3 lucky winners will receive Amazon gift vouchers. With the increase in the production of global digital data, it is anticipated that cyber attacks will quadruple in the near future.
organizations are going to need cybersecurity professionals who can prevent these attacks. A career in the field of cybersecurity is lucrative and a very smart decision for professionals now. So, what are you waiting for? Get certified with SimplyLearn and become a cybersecurity expert. If you enjoyed this video, a thumbs up would be really appreciated. Don't forget to subscribe to the Simply. जी, क्या आपने इसमें क्या स्टडी किया? जी, आपने इसमें क्या स्टडी किया? सर इसमें से मल्टीपल हमें बता दें कि हैकर्स किस तरीके से हैक कर सकते हैं और इसमें ये भी बताया कि मतलब वो प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, कि उस हैकर को रोक सकते। जबरदस्त, मल्टीपल टेक्निक्स हमें बताएं। बिल्कुल ठीक है। आप देखें कि वहां पर जो बताया है और यहाँ पर जो बताया है, तो आपका आंसर जो है डेफिनेटली इस बुक के आंसर से अच्छा होगा, क्योंकि उसमें हैकिंग बताया है, क्रैकिंग बताया है, वॉर्म का बताया है, डीडॉस का बताया है, सही है। उसके बाद आपके पास इंटरनेट क्राइम का बताया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो 4 या 5 पॉइंट्स है, इससे कहीं ज्यादा जो है वो आपको वहां बताया है। तो अब अगर एक दफा आप लेक्चर लेकर सिर्फ आप क्राइम्स को बताना ही शुरू करेंगे, एक एक 2 लाइनें भी लिखेंगे, तो आपका आंसर बुक के आंसर से 10,000 गुना अच्छा होगा। ऐसा है कि नहीं? यस सर, ऐसा ही। अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है, हैकिंग क्या है। देखिए, आप हैकिंग जो है वो इलिजिटिमेट एक्सेस है, इलीगल एक्सेस है किसी कंप्यूटर का, किसी कंप्यूटर में मौजूद किसी फाइल का या किसी कंप्यूटर का, उसको हम हैकिंग कह रहे होते हैं, सही है। और हैकर जो प्रोग्राम ऐसे बनाते हैं कि जिसके बेसिस पर उस कंप्यूटर को एक्सेस किया जा सके, उसकी इंफॉर्मेशन को, जिसे बोलते हैं, वो सेल आउट किया जा सके। इसकी हिस्ट्री है हमारे पास। हैकिंग टुक ऑन नेगेटिव कोनोटेशन, सही है। तो कोनोटेशन जो है आपके पास नेगेटिव हमेशा माना जाता है, कभी भी हैकिंग को पॉजिटिव नहीं माना जाता। फेज 3 क्या है? 1990 का है। तो जैसे जैसे जो है हैकिंग बढ़ी, इन्होंने क्या किया? डिनायल ऑफ सर्विसेज। आप ही चाह रहे हैं सर्वर को एक्सेस करना, सर्वर को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। आप चाह रहे हैं प्रिंटर को एक्सेस करना, प्रिंटर को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। आप स्कैनर को एक्सेस करना चाह रहे हैं, वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो वहां पर these called denial of services, इसको हम कहते हैं denial of services, सही है। तो ये आपके पास नेगेटिव मानी जाती है हमेशा से। अच्छा, denial of services क्या है? ऐसा करता हूँ, उसकी छोटी सी वीडियो में दिखा देता हूँ आपको, ताकि आप इससे अच्छा लिखें। Welcome to Denial of Service Attacks. In this learning object, we'll explore what a denial of service, or DOS, attack is, and how a single hacker can take down a system. As an IT professional, it's important to understand the history of these attacks so you can continue to guard against them. What is a denial of service attack? During a denial of service attack, a hacker denies a service to authorized users. In addition to an outright denial,
It may also involve delaying time-critical operations by preventing a machine, a server, or an entire network from responding to a user's request. Hackers create these delays through resource exhaustion, where they take up or exhaust all available bandwidth, disk space, or memory capacity. They find ways to trick a machine into either crashing or performing so poorly that it's impossible to work as intended. Denial of service attacks are intentional and malicious. How do they work? In the early days of network computing, it was quite easy for a single person to wreak havoc on users and websites. Once upon a time, it was possible for a single hacker to exploit TCP/IP protocols. The hackers simply flooded a server with multiple ping requests until it was overwhelmed and couldn't respond, which effectively shut down the server. Early hackers invented ways to exploit weaknesses in TCP/IP, ICMP packet implementations because they knew that early operating systems couldn't handle these errors. Quack, quack. Simply sending the server something other than what it was expecting was enough to shut it down. At one point, even sending packets larger than what the ICMP specification called for was enough to crash a machine. Another early trick involved exploiting the TCP/IP three-way handshake. Here's how the handshake works. The client sends a SYN packet to the server, indicating its intention to synchronize or start a conversation. The server returns a SYN-ACK packet acknowledging the SYN request. The client then sends an ACK packet acknowledging the SYN-ACK and waits for further communications. No, go away. Go away. Wah. Wah. Hackers exploited this known process by not communicating after the final ACK, which left the server hanging. The server is effectively left saying, "Hello, I'm waiting, and waiting, and waiting." The hacker starts multiple conversations and always leaves the server waiting after the final ACK packet. These fill the server's incoming queue and its limited number of open requests. The hacker has effectively backed up the server and denied service to all legitimate requests. Aside from attacking TCP/IP vulnerabilities, hackers are also adept at attacking poorly constructed websites. For instance, unprotected search mechanisms provide a popular point of access into a website. Let's look at a typical online store web application. Say you need to buy a heat lamp for your iguana, Padfoot. You enter the term heat lamp into the search box on Bob's Exotic Animals website. Your search request passes from your computer to the web server. But Bob's inventory isn't on the server, it's in his database. So the web server passes your search term to Bob's database in a query. His database compiles a list of all matching product records and passes it back to the web server, which organizes and formats those records before sending them back to you and displaying them on your computer screen. Ah, there's the heat lamp Padfoot needs. Legitimate searches, like yours, are no problem for Bob's website. But what if a hacker is attempting to crash the site? What if they're trying to trick the system into doing something it can't handle? Let's say the hacker enters AEIOU into the search box on Bob's website. Instead of searching for a specific word or phrase, the hacker wants every product name that contains a vowel. The search request is passed off the same way to Bob's database. However, this time, the matching product records take longer to compile because the hacker's request matches every product in Bob's database.
Now, what happens if the hacker sends the same search request hundreds, if not thousands of times? Because Bob didn't prevent this type of denial of service attack, it effectively locks up his database and shuts down his website. Now, no one can order heat lamps. Nowadays, programmers design operating systems to address and avoid TCP/IP errors. They also typically aggressively protect against malicious use of systems. Searching for the vowels A, E, I, O, U on any well-designed website won't fool the process, and it won't take down a website. Because of programming advancements, it's very difficult for a single hacker to take down a server or network using these attack methods. However, as programmers address known vulnerabilities, hackers, ever innovative, continue to evolve and find new techniques to attack servers. DOS attacks have evolved into DDoS attacks, or distributed denial of service attacks. Distributed means the attacks are spread out over several, perhaps thousands, of computers instead of launching from a single computer. But that is a topic for another day. Today, you learned what a denial of service attack is and how hackers exploited early flaws in operating systems to deny service to authorized users. Understanding the history of these attacks provides you with the foundation to prevent future attacks. Congratulations, you've completed denial of service attacks. Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, messages that जी, अब आप बताइए डिनायल ऑफ सर्विस अटैक होता क्या है? जी बताइए। एक है सर कि जब यूज करते हो यूजर को मतलब यूजर यूज ना कर सके, अनअवेलेबल हो उसके लिए। देखिए इसमें होता ये सिंपल सा कि सर्वर को वो रिक्वेस्ट दी जाती है जिससे सर्वर को सर्च करने में, डेटा कंपाइल करने में प्रॉब्लम हो। जो सर्वर जो है उसके पास बहुत सारी ऐसी क्यूरीज आती हैं जो क्यूरीज काफी ज्यादा टाइम टेकिंग होती हैं, तो सर्वर हैंग कर जाता है। और जो यूजर्स होते हैं, लेजिटिमेट यूजर्स होते हैं, वो अपनी छोटी छोटी क्यूरीज के लिए इंतजार करते रह जाते हैं। इसको हम कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विस। ठीक है, तो ये लेक्चर मैंने डाला इसी वजह से, या जब डिनायल ऑफ सर्विस आप बताएंगे तो उसके अंदर इतनी अच्छी क्वालिटी होगी, डेटा के अंदर इतना अच्छा आप समझा रहे होंगे कि नंबर काटने का कोई लॉजिक होगी ही नहीं। देखिए, नंबर जब कटते हैं बच्चों के, जब उनके पास इंफॉर्मेशन कम दी जाए उन्हें, या उनको उस कॉन्सेप्ट का पता ना हो। ठीक है बेटा, इस वजह से जो है मैंने वीडियोस आपको दिखा था। अच्छा, हैकिंग, यूज ऑफ हैकिंग टू प्रमोट पॉलिटिकल कॉज। अच्छा, इसके अंदर क्या था, जब आपके पास ट्रम्प था तो ये FBI ने साबित कर दिया था कि ट्रम्प ने क्या किया था, रशियन हैकर्स के थ्रू मिलकर अपना इलेक्शन जो है वो चेंज करवाया था। ये आपको पता है ऑलरेडी। ये हैकिंग का जो यूजेज है किस हद तक खतरनाक होता है, ये बिल्कुल क्लियर है ये बात। हैकिंग लॉ 1986 में आया पहली दफा, और हैकर्स जो है डेफिनेटली इनके लिए बड़ी सख्त और ये हनी पॉट स्कीम, अभी जो मैंने वीडियो दिखाई है आपको, इसमें ये सब लिखा हुआ है जो यहाँ पर है। हनी पॉट स्कीम क्या होती है, यूजर को बताया जाता है कि भाई जो हैकर है वही देखता है तो सब कुछ हैक कर लिया है, मगर उसके अंदर सब डमी डेटा होता है, कोई काम का डेटा होता ही नहीं।
ये हैकिंग लॉ आ गए हमारे पास। अच्छा, हम हैकर को पकड़ते कैसे? This episode is brought to you by Dashlane. Try Dashlane Premium free for 30 days at dashlane.com/infographics. And never forget another password and keep all your online accounts secure. In today's ever more digitally connected world, a new breed of criminal has arisen, the hacker or cybercriminal. Some hackers claim to act for the public good, leaking sensitive and derogatory government information or revealing the depths of a corporation's corruption. Most, however, are just simple crooks. And while for many they can successfully evade the law for a time, the law inevitably catches up with them. Hello and welcome to another episode of the Infographics Show. Today we're taking a look at the hackers who got busted. 3. Kevin Poulsen. Kevin Poulsen, known online as Dark Dante, was a prolific hacker who at age 23 hacked into a federal computer network. This time he decided he'd snoop on files centered around a federal investigation into the notorious Filipino president Ferdinand Marcos. A notoriously corrupt official, Marcos had stolen billions from the Philippines and had a long record of human rights abuses. No doubt a sensitive subject. Poulsen's intrusion was swiftly detected, and the feds started coming after Poulsen. Going on the run, Poulsen went underground for 17 months, but like most other hackers, couldn't resist the temptation to keep on hacking. As if he hadn't brought enough heat on himself already, Poulsen hacked into the FBI's network and revealed wiretap details for mobsters, foreign politicians, and even the American Civil Liberties Union. Public outcry at the leaked details led the FBI to lend their support for the search for Poulsen, but Poulsen still couldn't help himself, and he and some friends took over the phone lines for an LA radio station and ensured that they would be the winning callers in various contests, ultimately getting 2 Porsches, several Hawaiian vacations, and $20,000 in cash. But as the search for Poulsen intensified, the popular TV show Unsolved Mysteries aired a segment on the renegade hacker, and despite the studio's phone lines going dead when the segment aired, employees of a local supermarket that had seen the show contacted the authorities anyways after recognizing Poulsen from the episode. Called the Hannibal Lecter of computer crime, a judge decided to hold Poulsen without bail for 5 years in federal prison, while the government put their case against him together. That's how extensive Poulsen's cybercrime spree had been. Yet, at the end, they only charged him with lesser crimes, such as money laundering and wire fraud. Sentenced to time served and released on probation, not allowed to touch a computer for 3 years. These days, Poulsen is a respected journalist who writes about computer security for Wired magazine, along with several books. He's also turned his prolific skills as a hacker for good by finding 744 registered sex offenders who used MySpace to troll for underage victims. 2. Albert Gonzalez. Next up is a story of a bad guy turning good guy, turning bad guy again. Known online as Kumba Johnny, Albert Gonzalez was the ringleader of ShadowCrew.com, a black market website where hackers sold stolen credit card numbers, social security numbers, passports, basically anything one would need to falsify an identity or steal a real one. Operating successfully for years, Gonzalez was ultimately discovered and arrested for credit card fraud in 2003. Upon his arrest, however, Gonzalez agreed to become an informant for the government in exchange for his freedom, playing a key role in Operation Firewall, a massive online program which targeted the world's most prolific hackers. With Gonzalez's help, the U.S. government arrested 28 hackers across 8 states and 6 foreign countries, all of them indicted on charges of selling 1.7 million credit card numbers. Immune to prosecution due to his cooperation, Gonzalez was offered a job with the Secret Service, which he happily took. Taking on the online persona of Soup Nazi, after the famous Seinfeld episode, Gonzalez got to work snaring hackers for the U.S. government,
Because Gonzalez had taught the government most of what they knew about hacking, though, it was easy for him to cover his tracks as he went on to secretly begin his life of crime anew. Partnering with Ukrainian hacker Maxim Yastrimsky, known as Maxik, Gonzalez began installing packet sniffers on vulnerable store networks across the U.S. Driving around with a laptop hooked up to a powerful antenna, Gonzalez and his friends breached the networks of stores such as TJ Maxx, Target, and Barnes & Noble, and installed their packet sniffers, which would secretly grab credit card and debit card data. That data was then sent to one of Yastrimsky's computers all the way in Turkey, while 2 other European cohorts hacked Heartland payment systems, stealing credit card information from 130 million transactions. In not exactly a subtle move, Gonzalez left his job with the Secret Service and began living the high life, buying a brand new BMW and blowing thousands of dollars every weekend as he partied with his hacker friends. Though the Secret Service suspected that Gonzalez was back to his criminal ways, they couldn't quite prove it. Gonzalez had taught them everything. Take flight. Okay, आपने ये देखा कि इसके अंदर किस तरह से इन्होंने क्या किया। लास्ट वाले के अंदर आप ये देखिए, इन्होंने एक पावरफुल एंटीना लगाया हुआ है और गाड़ी ले जाके जो है वो जितनी भी स्टेट्स है, उस स्टेट्स के अंदर जितनी भी मार्ट आते हैं, सही है, उन सारे मार्ट से इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट होती है और कलेक्ट होने के बाद वो इंफॉर्मेशन जो है यूक्रेन में चली जाती है, तो तुर्की में चली जाती है। वहाँ पर उन आईडीज के हिसाब से क्रेडिट कार्ड दोबारा बनते हैं और 130 मिलियन ट्रांजैक्शन हो जाती हैं उसमें, और उनके बिल जो उन लोगों को, उन यूजर्स को आता है जिन्होंने कभी वो ट्रांजैक्शन की ही नहीं होती है। अब ये देखेंगे FBI किस तरह से हैकर्स को पकड़ती है। उसके बाद हम लेक्चर पे वापस जा रहे हैं। Kevin Mitnick is considered one of the most wanted hackers of all time. He toyed with society, riding buses for free, intercepting phone calls, and manipulating McDonald's drive-thru speakers. And of course, gained unauthorized access to dozens of computer networks. But he never hacked for money, nor did anything malicious with the sensitive data he uncovered. That's why the FBI wanted to find him, so they could bring him over to their side. How many hacking tricks did he pull, and did the FBI finally catch him? Let's find out. From a young age, you could tell that Kevin Mitnick had something special about him. He'd found ways to manipulate the system and twist an arm here and there to get what he wanted. At age 12, back in 1975, while his schoolmates were paying for the bus, he already found his first way to hack a society. At the time, Los Angeles Transit used a punch card system. Every time you wanted to ride the bus, your ticket would get a very specific hole. However, he noticed that all of the bus drivers used the same hole puncher. That was the only piece of information he needed. With a smile on his face, he managed to convince the bus driver that he was working on a school project and asked for a sample hole punch and the location of where he could buy his own puncher. Now, with his very own hole puncher, he went dumpster diving for unused transfer slips next to the bus company garage. From then on, he rode the bus for free. The act of tricking the bus driver actually has a name. It's called social engineering, and it's what psychologists use as a term to describe the manipulation of people into performing actions or divulging confidential information. As it turns out, Mitnick, even in the tender preteen age, was a master of it. After he'd finished up making the Los Angeles Transit system his slave, he migrated to a new form of social hacking, phone phreaking, with a PH. Back before the internet was widely accessible, telephones were one of the most commonly hacked technologies. Phone phreaking was particularly popular from the 60s through the 80s. The hackers would learn how the phone operating systems worked and then find a way to exploit them. When I was 35 years of age, many years ago, I was homeless. I was sitting around. Phone phreakers such as Kevin could collect sensitive phone numbers, mask their own phone numbers, and even charge the cost of their calls to complete strangers. Very sneaky. Mitnick could take it one step further. He'd amassed such an in-depth know-how of the phone systems that he could even imitate dial tones just by whistling. So by making a few high-pitched squeaks, he could make international phone calls without forking over a single penny.
Even though he could use his societal and technological hacking abilities for all kinds of illegal activities, in his teenage years, he mostly used them for fun. With the help of his friend Lewis, Kevin decided it would be a hoot to hack into a McDonald's drive-thru speaker. Using a modified two-way radio, he was able to override the system. And instead of the drive-thru speaker directing into the cashier's headset, it directed into Kevin in the parked car across the street. This meant that he could reply to the customer's orders, pretend to be the employees, and play all kinds of pranks. When the cashier realized that something fishy was going on, he went out to investigate. When peering into the speaker, Kevin shouted through the radio, "What the heck are you looking at?" And, as you'd expect, the cashier got one mighty fright. So, as you've surely learned by now, Kevin Mitnick was one talented youngster who had no problem taking plenty of pleasures by manipulating systems. But let's rewind for a second. Who is this guy? Where'd he come from? And how'd he learn about all these nifty hacks in the first place? Well, we'll tell you. He was born in Van Nuys, which isn't too far from Hollywood. He attended the James Monroe High School, during which he became an amateur radio operator. This first-hand experience in the radio room is what helped him to understand how electronic wavelengths and signals worked, which correlated with the phone phreaking days. The radio room would have also given him access to computer systems and software that the majority of teenagers in the world hadn't even heard of. As technology advanced, so did Mitnick's skills. It was 1979, when he was just 16 years old, that he gained his first unauthorized access to a computer network. That network belonged to a company called Digital Equipment Corporation, or DEC, and he broke into their system and copied the company's software. Although this would come back to haunt him some 9 years later when, spoiler alert, he was charged and convicted for it. Then in 1981, the 17-year-old Kevin and a friend named Louis DePayne hacked the mainframe Cosmos computer system for Pacific Bell, a phone company now owned by AT&T. Once Kevin had maneuvered into the mainframe, he could divert the phone lines and intercept any of the calls going through the exchange. Regular folk who used Pacific Bell service quickly started to complain about what they thought were errors and pranks. Fair enough too, because Kevin would answer these calls himself, and he wasn't afraid to throw a few tasteless jokes around. With an obvious interest in Pacific Bell, one night, Kevin snuck into the building where Cosmos was housed. He took manuals and documents containing a stack of passwords. The plan was simple: take the documents, photocopy them overnight, return everything exactly where he found them before morning. What Kevin didn't count on, however, was that Louis was telling another friend, and that friend ratted him out to the police. This put Kevin on the watch list. Cops pulled him over the next day, and he was sentenced to 3 months behind bars with a year's probation. Ouch. You'd think that after winding up in prison that Kevin would have learned his lesson, but nope, entirely the opposite. Once he was released on probation, full of crazy ideas in his head, he dove straight back into the hacking pool. His next project? Hacking the NSA and listening. जी, इसमें आप ये देखें, एक कितनी ये दुनिया के नंबर 1 हैकर है, ये जिसने टेलीफोन लाइंस को भी हैक किया, मैकडोनल्ड्स की जो सर्विस है, जिसे बोलते हैं ड्राइव अवे, उसको भी उसने हैक किया और उसके बाद मैनिपुलेशन की। सही है, तो ये तमाम की तमाम चीजें एनएसए को जाके जिसने आखिर में हैक करना शुरू किया, तो दुनिया के नंबर 1 हैकर है ये। तो उसके बाद जो है वो इन्होंने सीखा नहीं है कि इनको क्या करना है और इनको क्या नहीं करना है। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे सर देखिए। एक क्वेश्चन है। जी बेटा बोलो। सर अगर किसी ने पहले हैक किया हो और उसको आइडिया नहीं हो कि भाई मैं एक क्राइम कमिट कर रहा हूँ, और तो वो उसको जैसे कि मिटनेक को 9 इयर्स के बाद भी फेलेनी के लिए चार्ज कर लिया गया था, तो इसमें वो बंदा क्या कर सकता है? ये क्राइम तो क्राइम है ना, ये तो हो नहीं सकता कि आप पीछे जाके उसको मिटा दें। अगर आपसे कोई गलती हो गई है उसका सोल्यूशन क्या है कि आप जो है वो उस चीज को जो है दोबारा कमिट ना करें, और जिससे जो पैसा आपने लिया है वो वापस कर दें विद थैंक्स, और वो नेक्स्ट टाइम उस तरफ जा ही नहीं। आप यहाँ पे तो अभी देखिए कि आपके पास ये स्वीडन है, सही है, स्नोडेन। तो स्नोडेन क्या है, दुनिया ये सीआईए का एक एजेंट था जिसने ओबामा के दौर में ये बताया कि सीआईए जो है वो क्या करती है, फोन टेप करती है जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जितने भी आपके पास कंट्री के अंदर अमेरिकन हैं, उनके फोन टेप करती है। उसके बाद उसने किस तरह से वो चीजें पब्लिक की। देखिए, जिस आपका जो
जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपको वो है मुल्क को प्रोटेक्ट करना, तो आपको पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आप उसको रिवील ना करें। तो उसने स्नोडेन ने जो जुर्म किया वो यही किया जो उन्होंने, मगर उसने यही बोला कि ये जुर्म जो है वो गवर्नमेंट कर रही है और वो जुर्म मैं नहीं कर रहा। मैंने सिर्फ ये बताया कि CIA जो है वो जितने भी अमेरिकन हैं उनके फोन टेप करके क्या हासिल कर रही है, और इस बात पे जो है बाद में बैंड हुआ और ये लॉ बना कि CIA जो है किसी का भी फोन जो टेप नहीं करी। ठीक है, ये स्नोडेन ने किया था ये। तो ये हैकिंग से रिलेटेड चीज़ें जो है, अच्छा मैं हमारी लास्ट क्लास होगी तो इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा कि ये हैकिंग में आप किस तरह से एंटर हो रहे होते हैं और किस तरह से निकलते हैं। ठीक है, मैं आपको करवा भी दूंगा, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर पढ़ाते हैं इस चीज़ को।